भला भॼण जो सबबु कहिड़ो हूंदो स्कूल उहो उस्तादु मारींदो हो ॾाढो। उन करे तव्हां भॼी वेंदा हुआ। अच्छा हाणे तव्हां जॾहिं हिते पहुतो वई तव्हां में इहो तजसुस हुयो तबियत में त जेके शयूं तव्हां हुते ॿुधियूं पिए ॾिठियूं पिए त सिंध में वञी कयो पंहिंजे ॻोठ में वञी ॻोल्हिजे, हा वाक़ई हिनखे ॻोल्हिजे। बिल्कुलु। अच्छा तव्हां आयो पर तव्हां उते अची वियो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, शुरू बि तव्हां कयो हुओ? सही। ठीकु। हाणे अर्ज़ु आहे त आऊं ॿियनि जे मुक़ाबले में मुंहिंजा ॿिया बि हमअसर आहिनि से बि कंहिं हदि ताईं मूं सां गॾु, पर आऊं रहियो सिंध खां ॿाहिरि, मैट्रिक ताईं त सिंध में, पर पोइ जूनागढ़ में 4 साल, उतां पोइ अलीगढ़ में 6-7 साल, पोइ अमेरिका में। इहो हिकिड़ो मोहबत ऐं इश्क़ आहे न हिकिड़ो सिंध। वरी जॾहिं वञा सिंध में त पोइ उन सिंध जी ॻाल्हि जेका सा घणी यादि रही, इन करे छाकाणि ॿाहिरि घणो रहियो। मोहबतुनि जो सबूत आहे, जेके पना पखिड़िया पिया आहिनि तव्हांजे मोहबतुनि जो सबूत आहे। ऐं अॼु इहो सबबु आहे त अॼु असां तव्हां खां पुछणु था चाहियूं, ॾिसणु था चाहियूं, वॾा जेके पंहिंजे तौर ते वॾा स्कॉलर्स आहिनि, मालूम करणु था चाहिनि उहे सुवाल जेके शायदि हिननि जे ज़हननि में हुजनि। तो हाणे इहे शयूं ॻाल्हियूं त असां वक़्तनि फ़वक़्तनि कंदा रहंदासीं। मां डॉक्टर हमीदा खोड़ो साहिबा खे अर्ज़ु थी कयां त डॉक्टर साहिबु तव्हां वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, तव्हां जेको पुछणु चाहियो डॉक्टर साहिब खां हिस्ट्री जे हवाले सां। अंग्रेज़ी न ॻाल्हाइजे, हाँ जी, ज़बान जी कोई पाबंदी कोन्हे, अंग्रेज़ी उर्दू सिंधी। डॉक्टर साहब, I mean, we cannot call you anything less than a genius. There is no question. Because I don't think that I have read of any person in the modern times, a research scholar who has covered as much ground and as many aspects of learning as you have. So there are geniuses, of course, there are philosophers, mathematicians, and so on, but they're mostly single subject persons, or maybe a few. So in a true sense, I would say that you are a Renaissance man of Sindh and also a very rare genius. Now, there are of course many questions on history, but I'm going to just go beyond the limit of just a historical question and ask you a question which is in the mind of all Sindhis. Sindh is passing through you have done work on folklore, on history, on archaeology, all these things which are belong to a settled nation. A settled nation has its folklore, its archaeology. You can do it at leisure. There are many countries in the world where this work is done and there is no disturbance. But in this province, in this region, we are going through an immense period of disturbance. Our whole life has been put upside down in the last few decades. Our language is in a crisis, I would say, which it has not been for thousands of years or ever since it has been. It has evolved, but it has not been in such a crisis. Our culture is now being consigned really to villages and to certain areas. It is under a threat in this growing urbanization. What do you see as the future of Sindhi culture, Sindhi language, and what aspect do you think the culture of Sindh will take from now on? Well, it's a very important question. It's also a crucial question, I must say. But first, I will directly react to your question and say that the future of Sindhi culture, Sindhi people, and Sindhi language and all that is bright. I am very optimistic. Just looking at the very audience today that we have and the scholars that who are on your side, we should be hopeful. We should not lose hope. But there are problems, and surely we have to recognize those problems. I personally feel that we people in Sindh, particularly the younger people and even elderly people, they have shied away from facing the questions. Now, I don't know, maybe that it is their inability to face things and their incompetence, you may say, or for certain other reasons that they have not been able to react, but they have not amalgamated themselves and pushed into the crowd and elbowed out somebody and got ahead. They are very shy, probably Sindhi people. And this policy, not policy, but the psychology of isolation
somehow I might call it, among the Sindhi people, that's responsible for their being away a little bit. Of course, Pakistan came. It was a great event. It was a great event, and also it was a great challenge for all, not for people of Sindh, but for all. And people of Sindh, of course, more so, because people of Sindh wanted Karachi to be their capital. And our great leaders, they invited our government that they should be here. Now, with this much challenge, they should have come up to face this challenge squarely. Instead of doing that, perhaps they became a little bit cowed down. And now the second point is that our educational system, particularly in Sindh, I'm responsible for it somehow, and you maybe, and anybody else, we did our best, but because of the politicians and because of the people who lack vision, and I feel that at least for the last 3 generations, beginning from 1970 or even a little bit earlier, our younger people have remained where they are. We have not been able to go ahead. And example I will give you, because I know at that time we were with Bombay University, and our younger people who used to pass matriculation BA, they were far superior in English to any other student from any other side. And this, see how slowly it has changed. Even younger people from Sarad, our Pathan brothers, they have gone ahead. Even CSS, they are shining out, going ahead, and our boys are not. Why? Because our politician, he just nursed them on slogan. We are slogan fed, and we have not faced the realities. And I'm sure that things are changing. I have a little bit hope that beginning from this year, because when I go to Sindh University now, I find many younger people coming to the library, which never happened, at least since I left the university. Nobody cared for the library. Now younger people are going to the library. I said this is a good sign. People are going and reading. And second point is that also they are going out of Sindh, and in some of the functions they are speaking out. See, Sindhis are very shy. They will not. They can talk, you see, among themselves. They will even create a hello, balo, and a lot of noise. But very few people from us can go outside of Sindh and talk in the forums where they should talk. But now some people are going. It's a great sign that things will improve. But it requires hard work. It requires confidence. And it requires a little bit of at least wataniyat, or whatever you may call it, you see. I consider the whole Pakistan, the entire world, as my watan. But Sindh is my primary watan. And after all, we should think of our own people and our own country. I hope things will improve. Thank you. Repeatedly you said Sindhis are shy. Is it any particular reason you can trace has been traditionally shy, historically shy, genetically shy? Well, that would be take us too long, see, to discuss that whole perspective. But this is my view, and I'm not correct maybe that they are not shy, but I feel that they are shy. I think you can call it also self-effacing and unassertive. यानी कि सिंधीअ में असां चई हुज़ूर शर्म चई सघूं था हां Yes, so many words as- पंहिंजो पाण खे न पढ़ाईंदा आहिनि हां ईंदनि बि त चवंदा त असांखे नथो अचे ॿिया माण्हू कुझु बि न ईंदो त पोइ टपा बि ॾींदा आहिनि सही है। कलीम तव्हां आर्कियोलॉजी जे पॉइंट ऑफ व्यू खां डॉक्टर साहब खां कुझु पुछणु चाहींदो जी मोहनजे दड़े जे हवाले सां हिकिड़ी प्रिजर्वेशन अथॉरिटी जो क़यामु थियो हुयो ऐं उहो उन वक़्त जी गवर्नमेंट महसूसु कयो त मोहनजो दड़ो पाकिस्तान जे लोकल रिसोर्सिस में रही करे संभालजी न सघंदो। उन हवाले सां हिकिड़ो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बि ठहियो हो ऐं मोहनजो दड़ो प्रिजर्वेशन अथॉरिटी पंहिंजी डिघी अयामकारीअ में उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जी एडवाइज़िस खां मुस्तफ़ीद बि थींदी रही। अवां बि उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ते हुयो। उन ज़माने में कुझु डिबेट्स इहे बि रहियूं त यूनेस्को जेके एक्सपर्ट्स खे घुराईंदा रहिया ऐं हर साल उन्हनि जो ओपिनियन बि वठंदा रहिया, पर समहाउ आर दी अदर मोहनजे दड़े जी हालति न सुधरी ऐं हिकु वक़्तु उहो आयो जो प्रिजर्वेशन अथॉरिटी खे वाइंड अप करिणो पियो। उन वाइंडिंग अप सेशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे इजलास में तव्हांजी ऐं डॉक्टर दानी जी शकरंजी बि थी। छा तव्हां ॿुधाईंदो त
मोहनजोदड़ो प्रिजर्वेशन अथॉरिटी जे हवाले सां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तव्हांजी पार्टिसिपेशन, तव्हांजी शमूलियत केतिरे क़दुरु रही ऐं तव्हां उन अथॉरिटी जे कम खां केतिरे क़दुरु मुतमिन हुयो ऐं छा उन अथॉरिटी जे वाइंड अप करण खां पोइ जे लाइ को फ्यूचर जे लाइ को रस्तो तय थियो? जी, मोहनजोदड़ो अथॉरिटी मरहूम भुटिया साहिब जे वक़्त में क़ाइमु थी ऐं असांजो नाना साहिब जस्टिस उन जो चेयरमैन हो। उन खां पोइ शेख अब्दुल कादिर साहिब चेयरमैन थियो, छाकाणि जो हुन नाना साहिब जी जाइ वरिती हुई जज जी हैसियत में। इहो बि आहे त शायदि मुंहिंजो नालो बि तजवीज़ थियो त आउं चेयरमैन थियां, पर पोइ शेख साहिबु आयो त पोइ वरी उहो चेयरमैन थियो। इन में तमामु लाइक़ु माण्हू हुआ जेके उन अथॉरिटी ते हुआ। पर इंटरनेशनल जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जंहिंमें यूनेस्को अचे थो ऐं जेको लोकल गवर्नमेंट उन में पार्टिसिपेट करे थी, त पोइ उते जेतिरो मुंहिंजो तजुर्बो आहे त ॻाल्हियूं ज़रा आहिस्ते हलनि थियूं, ड्रेग सां हलनि थियूं। तकड़ियूं यकदमि जंहिंसां चवंदा हीअं थी पवे इहो कोन थो थिए। मुंहिंजे ख़्याल में ॿ टे ॻाल्हियूं जेके तन वक़्तु वरितो घणो। पहिरीं त दरिया ते पातो पए मोहनजोदड़ो खे, इहा हिकिड़ी वॾी तमामु तकलीफ़ हुई उन वक़्त जी। हाणे दरिया सिंध दरिया केॾो पावरफुल आहे, उन खे पोइ इन जे वास्ते कोशिशि थी त कीअं कजे छा कजे। आख़िरकार असां सिंध जा इंजीनियर तन खे इहो कमु ॾिनो वियो ऐं हुननि पर जेके बंद ॿधा ऐं दरिया खे डाइवर्ट कयऊं। मुंहिंजे ख़्याल में वॾी अचीवमेंट हुई। कम अज़ कम मोहनजोदड़ो सेव त थी वियो। हू जेकर उन खे पाए घणो पार्ट ऐं बयां थो त कम अज़ कम 2-3 एकड़ उन मोहनजे दड़े जे जेको उभरनि जो पासो आहे पंहिंजो दरिया पाए वियो हो। पर उन खां पोइ जंहिं दरिया छॾे वियो त आउं उन जाइ ते वियो हुउसि। उते वञी असां चयो त खोटराई करियो, हिते घणी खॾ थी वई आहे, त हाणे हिते असां ॾिसूं। उते जॾहिं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उते एक्सकवेशन कई त उतां आसार निकिता ऐं जेके तमामु यूज़फुल आसार हुआ। तंहिंजे महिल त मोहनजोदड़ो केतिरो उभरंदे पासे हो। हिकिड़ी मुंहिंजे ख़्याल में जेकर मोहनजोदड़ो अथॉरिटी कुझु कयो, इहो हिकिड़ो चङो कमु कयो त दरिया खे डाइवर्ट कयो। हाणे त वीचारो दरिया ख़ैर कुझु नथो करे सघे, पर उहो वक़्तु ॾुखियो हो ॾाढो। ॿी ॻाल्हि हुई त जेको सिम जो पाणी आहे हेठां अंडरग्राउंड वाटर जेको आहे, सा लेवल एॾी चढ़ी आई हुई मथे जो हाणे 24 फुटनि ते असां बीठा हुआसीं वञी। मुंहिंजे ख़्याल में 18 फुटनि ते 18 फुट हेठि पाणी हो। हेठि को बि माण्हू खोटराई न पियो थी सघे, एक्सकवेशन न पई थी सघे। छाकाणि को बि शाफ्ट तव्हां हणंदव त अनलेस यू गो डीपर यू कैन नॉट फाइंड दी अर्लियर। ख़ैर उन ते वॾी कोशिशि थी, छा कजे। पोइ इलेक्ट्रिक जा साईं जेके नल हणाया विया, पोइ हीअं कयो वियो, पाणी केॾांहुं नेकाल कजे, दादू कैनाल ताईं खणी वञे, इहो 2 महिलनि जो मुफ़ासिलो। इहा जेका स्कीम सॼी ठही त इन खे पाणी हेठिएं खे हेठि कजे, इन बि काफ़ी वक़्तु खाधो। इहे ॻाल्हियूं त करणु सवलियूं आहिनि, पर इहो सॼो कमु थिए, इहो हिकिड़ी तमामु वॾी स्कीम हुई। त घणो वक़्तु इन 2 ॻाल्हियुनि ते। टीं ॻाल्हि जेका हुई जो मुंहिंजे ख़्याल में करणु घुरिजे आहे, जंहिंजे वास्ते मूं तमामु रिकॉर्ड आहे पियो, मूं ऐं डॉक्टर दानी असां ॿिन्ही इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो। शायदि हुन घणो ॾिनो हुजे या मूं घणो ॾिनो हुजे, इन ॻाल्हि खे छॾियूं था, पर असां ॿिन्ही असां चयो त हाणे जेको असां पाणी जी लेवल खे 29 फुट हेठि वठी वियासीं। 18 फुटनि मां 17 फुट मूंखे यादि कोन्हे, पर 29 फुट पाणी जी लेवल जेका साइड थी वई इन्हनि पंपनि जे करे। त असां चयो त कम अज़ कम ट्रायल ट्रेंचिस लॻणु घुरिजनि। जेकर सेंटर में न उन खे डिस्टर्ब न करियूं त उभरंदे पासे ॾखिणे पासे उते ट्रायल ट्रेंचिस हणो। उतां जेके एक्सकवेशन में नयूं ॻाल्हियूं जेके असांखे अचनि, जेके असां रेस्क्यू करे सघूं, से त दुनिया जा ॾो खणी वञूं। इन में असांखे डिफीट मिली। असां स्कॉलर्स खे ऐं डिफीट मिली। छो मिली इन ॻाल्हि खे वधीक कंहिं था वञणु चाहियूं। इन ते ॿिया जर्मन स्कॉलर्स ॿिया उन वक़्तु ॿिया आया, यूनेस्को जे तरफ़ां घणी ॻाल्हि गॾिजी पई। पर मुंहिंजे ख़्याल में जेको वक़्तु इहो हो, सो तंहिं में का घटिताई थी हुजे, मूंखे कान थी घटिताई नज़र अचे। उन ॻाल्हि खे अॻिते खणिजे हा। पोइ छो उहा वाइंड अप थी वई जेका अथॉरिटी, उन वक़्तु आउं कोन हुउसि वाइंड करण में, न को इन वक़्तु आउं हाज़िर हुउसि जो तव्हांखे ॿुधाए सघां। पर बहरहाल मुंहिंजे ख़्याल में त उन तमामु सुठो कमु कयो, उन खे अॻिते हलणु घुरिजे हा। ऐं वरी ॿियो को चेयरमैन लाइक़ु वणिजे हा ऐं गवर्नमेंट इन में कुझु वठे हा। ऐं असांजी सिंध गवर्नमेंट जेका साहिब उन में जेकर वठे हा दिलचस्पी त थी सघे हा। पर इहे कम ॾुखिया आहिनि। वेन यू आर टाइड अप विथ एन इंटरनेशनल एजेंसी, इट्स नॉट ईज़ी टू गेट थ्रू, इट टेक्स टाइम। इंटरनेशनल एजेंसीज़ जेकॾहिं फाइनेंशियल हेल्प न कनि त शायदि इहो एतिरो बि न थिए। हाँ, फाइनेंशियल हेल्प जेके इंटरनेशनल एजेंसीज़ कनि थियूं, पर ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। असां फस्ट वी मस्ट पुट अवर हाउस इन ऑर्डर सो दैट वाट वी गेट वी शुड एसिमुलेट
and we should be able to use and move forward. Unfortunate situation is that here the third world countries, I will put it, not only Pakistan but other countries also, they are not prepared. There is no homework done, and all aid comes and it is all spoiled because you don't know how to spend it. True. This is the trouble.